Okay, all of you can see my screen, right? Yes, sir, it is visible. Okay. So what we have discussed yesterday is that this particular thing, I generally call it as the server address. Okay. So this particular it is just the name that I'm giving over here. यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ. Basically, it is the server name that I'm giving over here. In a real time scenario, it could be dev also, it could be PRT also, it could be the Q&A also. But this is the segregation that I'm doing. That okay, this is the B&M server, and this is the server that has been provided by institute to me, or I can make the copy of this server as well. So I can do n number of things with this. What is the address of this server? अगर मैं edit में जाके देखूंगा तो I can be able to see the address of this server is this. Okay. And कल हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि everything that I am doing, every kind of a configuration that I am doing, I am generally doing within a particular client. Okay. यहाँ पे client क्या है? 001. So in yesterday's session, I explained this thing that this 001 cannot only be the one user ID, but there can be thousands, tens of thousands. Yeah, depends on to the organization कि उनको कितनी user IDs की requirement है. They will have tens of thousand or maybe thousand or maybe lakhs of such user ID for one particular client. सारी के सारी यूजर आईडीज एक ही क्लाइंट के लिए चलेंगी. उस केस में क्या होगा कि अगर मैं इस यूजर आईडी ये यूजर आईडी वाला पर्सन कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करता है, दैट कॉन्फ़िगरेशन विल बी विजिबल टू एवरीवन अंडर द सेम क्लाइंट. तो इसकी इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन या इसी तरीके से जनरली एंड यूजर्स वर्क करते हैं. Okay, so this is generally known as the server address of mine, which in this case this is this, and then everything that I'm doing is within one particular client with one test user ID. जैसे इस केस में मैं जो user ID use कर रहा हूँ is this one that has been provided to me. I'm using this user ID for making all of the configurations which are required. ठीक है, अब इस screen के बारे में बात करते हैं. We were in yesterday's class we have seen that this one is an SAP easy access menu. Easy access menu is generally used by what? मैंने कल एग्जांपल दिया था कि there is a two type of people in SAP. Okay, one is an end user. एंड यूजर वो पर्सन होता है जो कि सिस्टम को यूज करता है फॉर एग्जीक्यूटिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस. And then there is a consultant. Consultant is the person who configures the system so that end users can use it. Okay. Consultant is the person who configures the system so that end users can use it. Okay. This is true for every scenario. Like खाली HCM के लिए नहीं. जैसे अगर आप फाइको उठा लो, MM उठा लो, SD उठा लो, PP उठा लो या कोई और टूल उठा लो, usually you will find all the I mean in every kind of a tool or in every kind of a company, these two things will be standard. That you will be working like let's say you could be working as a consultant or you could be working as an end user. Okay, end user of the system is someone who is having the business knowledge and whose work is to run day to day business transaction, whereas the consultant work is to configure the system correctly so that end users can use it correctly. Okay, so we'll discuss more onto this part again today. But let's come back to the system again. Let's try to understand some of the functionalities of it. So we'll make a new sheet and we'll call it as a system basic functionalities of system, or let's say the SAP GUI screen. Basic functionalities of SAP GUI screen. Now let's try to understand what are the basic functionalities of SAP GUI screen. See, the first thing is at one point of time, I can use
six session, 6 sessions in open scenario. मतलब ये जो GUI स्क्रीन है, लेट्स से मैं इसके ऊपर अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, लेट्स से दिस इज द स्क्रीन, ओके। लेट्स से अभी मैं इसके ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम डूइंग द कॉन्फ़िगरेशंस, और लेट्स से आई एम सेविंग द डिटेल्स, लेट्स से आई एम हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय, so I'm executing a transaction code. I've explained what is T code yesterday. T code is nothing but a 4 digit code जो कि जितनी भी functionalities SAP के अंदर है वो मुझे यूज करने देता है. फॉर एवरी फंक्शनैलिटी इन एस ए पी एच सी एम, या अगर कोई और मॉड्यूल की भी बात करूँ मैं, फॉर एवरी फंक्शनैलिटी टू बी एग्जीक्यूटेड इन एस ए पी, टी कोड इज अ शॉर्टर वे टू एग्जीक्यूट दोज फंक्शनैलिटीज. अगर मेरे को टी कोड के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं करना है तो मैं कैसे करूँगा? आई कैन लाइक इन दिस इजी एक्सेस मेनू, I can go over there and scroll down things and I can start using it as it is. Okay. So like I have explained in the demo sessions, ki this one is logistics, which is more related to the MM and PP and SD. We don't have to look into it. This one is more related from the accounting perspective. This one is something that we will be taking care of completing in this entire course. This one is again not for our part, because this is generally for FICO consultants again, and sometimes project systems consultant. And then this one again, is some of which we generally use it, but most of which is related to ABAP and some portal related configurations. So this is something that we will be working throughout this entire course, from starting from personal management, time management, payroll, training and event management, organization management, and so some of the things here and there. सो लेट्स से अगर मेरे को पर्सनल एक्शन देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? आई कैन गो ओवर हियर, स्क्रॉल डाउन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आई कैन गो ओवर देयर, स्क्रॉल डाउन, एचआर मास्टर डेटा के अंदर आई कैन गो ओवर देयर, स्क्रॉल डाउन. हियर आई हैव द पर्सनल एक्शन, सो आई डबल क्लिक इट एंड माय पर्सनल एक्शन स्क्रीन जनरली कम्स अप. पर्सनल एक्शन वो फीचर है जिसके थ्रू मैं एम्प्लॉइज को हायर करता हूँ, या प्रमोशन करता हूँ, या ट्रांसफर करता हूँ, या टर्मिनेट करता हूँ, या रीहायर करता हूँ. और अगर मैं चाहता हूँ कि कोई और एक्शन टाइप भी मुझे इसके अंदर ऐड करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ. ओके. बट जनरली एंड यूजर क्या करता है? ये सारी के सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. कंसल्टेंट क्या करता है? ये सारी के सारी एक्टिविटीज कॉन्फ़िगर करता है ताकि एंड यूजर इसको यूज कर सके. ओके. सो पर्सनल एक्शन के अंदर अभी जैसे मैं गया, सो आई कैन डू एक्शंस लाइक हायरिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, सैलरी इंक्रीमेंट, टर्मिनेशन, रीहायर, एज ऑफ नाउ विच लुक्स अवेलेबल टू मी इन द सिस्टम for a particular personal number. Personal number is nothing but again पता है कि every single point of time in every company there is a unique ID assigned to that employee, right? हर एक employee को unique ID assign की जाती है. अगर कोई employee है, let's say उसका नाम अगर सुरेश है, so there can have hundreds of employees जिसका नाम सुरेश है, या there can have hundreds of employees जिसका नाम सुरेश कुमार है. So how do we identify which Suresh Kumar? Okay. So that's why every single employee in the organization has to have a personal number, which is nothing but a unique ID. एक unique ID है for that particular employee. Okay, in SAP it is known as the personal number. Okay, so I'm going back again. अब जैसे यहाँ पे तो मुझे ये सारी के सारी फील्ड दिखा रहा है अभी. What if I want to see the T code of all of these fields? अगर मेरे को इन सारी के सारी fields का T code देखना है तो I can go into the extras, I can go into the display documentation. Oh sorry, I can go into the extras, I can go into the settings, and in settings I can select this field which is the display technical names. Once I select it, once I check it, I'll right click it, and now अगर मैं उस field के ऊपर वापस जाऊंगा तो as you can see I have these short 4 digit or 4 alphanumeric character words. This is nothing but this is known as the T code. मतलब जो अभी मैं scroll down करके यूज कर रहा था, अगर मुझे T code मालूम है उस चीज का कि personal action का T code क्या है, so instead of scrolling this much, I can directly go into the search bar, I can enter PA40, this T code, and I can hit enter. Once I hit enter, it takes me to the same screen. Okay, so this is the functionality of T code. This is how generally you can define the T code. There are different T codes for every feature.
and it can be performed through the help of the scroll down and through the help of easy access screen as well. Okay, so the first point, again coming on to the first point, that I can use 6 sessions in open at a time. So जैसे अभी ये screen है, let's say I'm doing a personal action over here. Now suddenly I have to do some other activities on the system as well. क्या करूँ मैं, इसको बंद कर दूँ क्या? नहीं. So at a time I can open 6 different tabs. जैसे विंडोज के अंदर अपन जनरली यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टैब्स वी कैन ओपन सो दैट द प्रीवियस एक्शन गेट्स कंटिन्यूड और उसको हैम्पर नहीं किया जा सके. सो आई कैन ओपन 6 different टैब्स एट अ सिंगल टाइम. सो जैसे अगर ये है, मेरे को अगर एक और टैब इसमें ओपन करना है तो कहाँ से करूँगा? सो देर इज दिस फील्ड new GUI screen. So I can select over here and now I have the new tab which is open. Okay, so I'll put it side by side. So this is a new tab and this is the previous tab. ये बंद नहीं हुआ है, this is the previous tab. Let's say here I am performing some other activities. Let's say कि एक employee का मैं address correct कर रहा हूँ. Let's say अगर मैं एक employee का address correct कर रहा हूँ, let's take this employee और इसका मेरे को address correct करना है. And at the same time I'm also executing that part. Okay, so this one is open, this one is open. Now I want to do third type of task. Okay, so I can open another tab and now I can bring it over here. So I have now 3 tabs open. Okay, so similarly I can open 3 more. Now I cannot open more. Maximum number of SAP GUI sessions reached. So at one point of time, मैं 6 टैब्स ही ओपन कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ if I want to perform the multitasking. Okay, so there is another way to do the same thing. Like as of now, अभी मैंने क्या किया था यहाँ पे, अभी मैं इस आइकॉन को सिलेक्ट करके टैब ओपन कर रहा था. There is another way to do that as well. Okay, उसके लिए there is a transaction code which is known as /o. जैसे ही मैं /o लिख के एंटर दबाऊंगा तो now I can click over here on generate and it creates a new tab for me. Again I click a /o, doesn't matter अगर मैं small caps में भी करूं. देखो यहाँ पे 3 टैब ऑलरेडी ओपन है and it is giving me that the next one that you will be opening will be the 4th one, generate, and I have the new session which is open. Okay, so /o is the T code to open new sessions. By the way, this thing is something that I've already written in the presentation, but I'm explaining again. I'll upload this presentation either ways, but I'm explaining it again. Okay, this is more convenient way. Generally, लोग इसी के through ही like use करते, but like yeah, it doesn't matter. Everyone, it depends what suits you. Okay, now let's see what /n does. There is another transaction code related to sessions only, which is /n. Okay, अब देखो अगर मैं इस स्क्रीन के ऊपर हूं अभी, okay, जैसे ये वाला स्क्रीन जो मैंने ओपन किया था, which is the PA40. Now here in this case I want to go back. मेरे को ये सेशन क्लोज नहीं करना है. I want to go back to the previous screen. Previous screen पे जो था मेरे को उसके ऊपर जाना है. So for that I use /n. I'll use /n and I'll hit enter and now I'm back to my previous screen. /o is to create new one, /n is to go back. Is to go back to the previous screen or previous session, previous screen. Okay, there is one more thing which is related to /n. Let's say again मैं इसी transaction code के अंदर हूँ, which is the PA40. And अब मेरे को क्या करना है? मेरे को let's say let's go over here.
मुझे ये वाला सेशन ओपन करना है वहां से डायरेक्टली इंस्टीड ऑफ गोइंग बैक। ये वाला जो PA20 वाला जो सेशन है, मुझे यहाँ से ओपन करना है इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली गोइंग बैक। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए आई कैन यूज इट डायरेक्टली। आई कैन यूज /n। /n का मतलब क्या है? गो बैक। एंड देन आई कैन यूज दैट ट्रांजैक्शन कोड डायरेक्टली ओवर हियर विद द /n, that is PA20. I hit enter. Instead of going back, I am now into the PA20 tab. जैसे अगर मैं यहाँ से भी करके देखूँ तो देखो मैं उसी स्क्रीन के अंदर आऊँगा। दिस इज द PA20 टैब। ओके, तो मैंने कुछ नहीं किया। इंस्टीड ऑफ गोइंग बैक एंड रिपीटिंग द टी कोड, आई कैन, और लेट्स से आई वांट टू ओपन अ न्यू सेशन एज वेल, बट आई वांट टू ओपन अ, आई डोंट वांट टू ओपन द होम सेशन, बट आई वांट टू ओपन लेट्स से PA40 अगेन। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि न्यू सेशन में चाह रहा हूँ कि ये सेशन ओपन ही रहे। So for that I can do /o and then I can use my transaction code which is PA40. तो /o किसके लिए मैंने यूज किया? /o का मतलब न्यू सेशन एंड PA40 मतलब डायरेक्टली वो मेरे को PA40 वाला सेशन ओपन करके दे दे। So if I hit enter, where I'm directly into the PA40 and that previous session is open. This previous session is already open. I have not tampered with it. मैंने क्या किया? न्यू सेशन ओपन किया with a direct transaction code, applying transaction code directly over here instead of using a new one. So we can use both /n and /o. We can use both /n and /o with other t, along with other t code as well, along with other transaction code, or which is also known as t code as well. Any doubt so far in this thing? I think so. It will be much more easier No, for you sir. guys once you practice it. अच्छा देखो, अभी मेरे पास में कितने स्क्रीन्स ओपन है? एक ये आ गई और एक ये वाला आ गया। ठीक है, तो अभी मेरे पास में एक ये स्क्रीन ओपन है, एक ये स्क्रीन ओपन है, और एक ये तो ऑलरेडी ओपन ही है, बट लेट्स skip it over here. So as of now, I can see over here that let's say we have 3 sessions open. I think so we should have more, but okay, we have this one as well. Acha. So I have these sessions. Okay. Can you see the scroller where I'm doing the typing? Yes, sir. राइट अब देखो, अगर मेरे को सारे के सारे सेशंस एक ही बार में बंद करने हो, इंस्टीड ऑफ क्रॉसिंग इट एंड डूइंग इट वन बाय वन, अगर मेरे को सारे के सारे सेशंस एक ही बार में क्लोज करने हैं, मेरे को पूरी तरीके से बाहर आना है SAP से। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो डेटा था, जो मैंने चेंजेस किए थे, वो सारे सेव हो गए। नाउ आई वांट टू गो आउट ऑफ द सिस्टम। आई वांट टू लॉग ऑफ फ्रॉम द सिस्टम। सो लॉग ऑफ करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? आई कैन यूज /n। /n मतलब काय के लिए? सबसे पहले यहां से बाहर जाने के लिए आई कैन यूज ex /n ex। सो वंस आई हिट एंटर, आई हैव क्लोज्ड एवरी अदर सेशन। ये वाला सेशन इसके लिए क्लोज नहीं हुआ क्योंकि अभी तक के मैंने यहाँ पे लॉग इन नहीं किया है, बट कैन यू सी एवरी अदर सेशन इज क्लोज्ड नाउ? Let's log in again. I've opened a new session. I've opened a new session again. अच्छा, अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे, अब मुझे ये सारा के सारा सेशन वापस से क्लोज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ? /n ex. Why should I use /n?
अब मुझे अगर न्यू सेशन ओपन करना है तो मैं क्या करूं? न्यू सेशन, आई वांट टू ओपन द न्यू सेशन. Slash and O. Why should I use slash n in this case? I can simply use slash o ना. Slash n तो मुझे पता है कि बैकवर्ड जाने के लिए यूज होता है, राइट right? अगर लेट्स से, जैसे अगर चलो ठीक है, मैंने ये अभी मैं होम स्क्रीन पे हूँ, राइट, आई एम इन द SAP इजी एक्सेस मेनू. लेट्स सी आई एम यूजिंग स्लैश एन. सो आई एम बैक ओवर हियर. यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो स्लैश SAP इजी एक्सेस मेनू चालू होगा. लेट मी यूज स्लैश एन अगेन. नथिंग हैपेंड. लेट मी यूज स्लैश एन अगेन. नथिंग हैपेंड. क्यों ऐसा हो रहा है? See, slash n is, again I'm explaining, slash n is to go back from the previous screen. अगर मैं किसी नई स्क्रीन के अंदर हूँ, let's say I'm in this screen. Now I want to go back to the previous screen, so for that I'll use slash o. इसके पीछे कहीं मैं जा ही नहीं सकता हूँ because this is the home screen, right? आईफोन पे अगर मैं दो बार होम बटन दबाऊंगा तो would it take me to somewhere else? It would only keep me to the home screen only, right? तो अभी मैं होम स्क्रीन पे हूँ तो कितनी बार भी मैं स्लैश एन यूज कर लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आई एम ऑलरेडी एट अ होम स्क्रीन. स्लैश एन ओनली वर्क्स व्हेन आई एम इनटू सम अनदर ट्रांजैक्शन कोड या अगर मैं कोई फंक्शनैलिटी यूज कर रहा हूँ वहां से मुझे बैकवर्ड जाना है तो उसके लिए मैं स्लैश एन यूज करूंगा. बट व्हेन आई एम ऑलरेडी ऑन अ होम स्क्रीन स्लैश एन डजंट वर्क. ओके. एंड स्लैश एन को जब मैं होम स्क्रीन पे ऑलरेडी हूँ then I don't have to use to enter a new session. I don't have to use a slash o. Okay. I don't have to use a slash no. I only can use slash o or automatically new screen open हो जाएगी because I'm already at a home screen. मैं slash n use करके backward क्यों जाना चाहूँगा उसके अंदर? Okay. So slash o is used for opening the new session, to open the new session. Okay. And the one which we learned is the slash n ex. Doesn't matter आप upper caps में लिखो या lower caps में लिखो, it works the same. Is to completely log off from the system से completely log off कर रहा हूँ. ओके. नाउ लेट्स सी, आई वांट टू, अभी देखो यहाँ पे क्या है कि अब नाउ आई हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस. मुझे कभी कभी पता नहीं रहता है कि ओके डेव कौन सा है, Q&A कौन सा है, PRD कौन सा है. इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन चेंज द थीम और फॉन्टिंग ऑफ हाउ द थिंग्स आर अपीयरिंग टू मी ओवर हियर? सो आई कैन डू दैट. लाइक जनरली अगर आप विंडोज सिस्टम के ऊपर काम करोगे तो इन अ विंडोज सिस्टम दिस टैब would look little different. But again, you can go onto the SAP GUI. There is an SAP GUI tab which will always be there, and then there will be a settings tab. In this case, it is the preferences, but there over there it will be a settings tab. Over there you can go and like preferences के अंदर जैसे ही मैं जाऊँगा, I can see this type of screen. अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे SAP जो SAP सर्वर में जो मैं यूज कर रहा हूँ, that is this server that I'm using, I want कि इसका कलर चेंज हो जाए जस्ट फॉर वन और द अदर रीजन कि मैं कुछ डिस्टिंग्विश करना चाह रहा हूँ तीनों के बीच में सो दैट आई डोंट कंफ्यूज माई सेल्फ. सो हाउ कैन आई डू दैट? आई कैन गो ऑन टू द कलर्स and these are the different themes that I can generally use. Themes are directly provided by SAP. This one that I'm using is the blue crystal one. Then I can choose the different color over here. That is, this one is little blue. This one is that is gold. This one is green. This one is purple. This one is red. Let's say I want to use a purple. So I can select purple. I can apply over here. एंड लेट्स से आई वांट टू चेंज द थीम अगेन. मैं सिर्फ कलर नहीं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं थीम भी चेंज करना चाह रहा हूँ. सो एज ऑफ नाउ दिस इज अ ब्लू क्रिस्टल थीम. अगर मैं कुछ सिग्नेचर थीम जो कि एक पुरानी थी उस पर कुछ जाना चाह रहा हूँ तो आई कैन सेलेक्ट अ सिग्नेचर थीम एंड इट जनरली लुक्स देन लाइक दिस वन. ओके. सो आई कैन सेलेक्ट द सिग्नेचर थीम एंड अप्लाई एंड okay, I have to restart the program before the changes appear. And signature theme के साथ में मैं color भी change करना चाह रहा हूँ. That is purple one. So I'll reapply this one. uh, I'll close it. I'll close this one again. I'll open this one.
So see, now can you see that font is little different? मतलब जो थोड़ा appearance था थोड़ा change हो गया है. It looks little old techie style. थोड़ा भी जो थोड़ा कुछ ज़्यादा यहाँ पे bluish हो गया है. But let me go and log in under this one. Let's see it changes the color. Okay, so the color is not changed. Let's try again. Theme is changed, but the color is not changed. Oh, now it's purple. So everything now you will see the entire color contrast and जो उसका feel था पूरे के पूरे जो टैब थे जैसे कि अभी मैं इसके अंदर PA40 यूज करूंगा now I can see a different type of a screen over here. It is not it is a different theme. This is the signature theme and इसके पहले अपन blue crystal यूज कर रहे थे. So that's how generally I can do it. Like अगर मेरे को normally themes वगैरह change करनी हो या फिर इस तरह की चीज़ें इसमें करनी हो तो apart from that you can add your own company's logo directly from here जैसे कि in this case let's say let's say I'm doing a new project for some XYZ company and then they wanted to apply their logo or everything over there, so through the help of this screen only you can generally do that. So let me again change the theme and signature themes. I am again going back to the blue crystal theme, or if I want I can go for the high contrast like this black and white type or as well. There is this one as well. Apply. Now I'm back with the previous theme जो मैं पहले वाली theme use कर रहा था. Now the signature theme doesn't appears to me anymore. Okay, so I hope you get it. Like ये themes वगैरह कैसे change करते हैं, if you want to apply your own logo तो system के ऊपर कैसे apply कर सकते हैं, all those things. Any questions, any doubt? No, Shall we sir. move ahead? No, sir. Yeah. Okay, so one After more thing. getting the system, it will be easy. Yes, actually क्या होता है ना, whenever you get started with new application or whenever you get started with let's say कि कल मैं decide करता हूँ कि मेरे को Evernote use करना है instead of using my note apps जो मैं regular note apps use करता हूँ. let's say अगर मैं notepad use करता हूँ उसकी जगह मेरे को Evernote use करना है, या let's say अगर उसकी जगह मुझे कोई एक third party note application use करनी है. So it will take some time to get used to it, but जब मैं एक बार used to हो जाऊंगा तो it becomes very easier for me to start collecting notes, to change the theme, to do even in some cases जैसे Mac के अंदर automations भी apply कर सकते हैं. If you want to do that, even if you use let's say अगर आप iPhone use करते हो तो there is a feature over there which is like do you guys know like generally there is a feature जहाँ से आप Siri को भी automatically configure कर सकते हो. There is a home app shortcut app I think so. Okay, so I mean like yeah, there can be like any application, कोई भी application अगर आप use कर रहे हो, so it takes a time, but initially it will look a little different
कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नॉट लाइक अ कोडिंग जहाँ पे इतना ज़्यादा वो दिमाग लगाने की कोशिश करनी पड़ती है। आई मीन दिमाग इसमें भी लगाना पड़ता है काफ़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। बट वंस यू रेप्लिकेट दो सिनेरियो, जैसे एक दो बार आपने वो सिनेरियो रिपीट करके देख लिए, it becomes very 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 easier for you. So more you practice, more you will, you know uh, more you will become familiar with the system. It's like जब अपन छोटे होते थे, like our parents used to teach us how to tie up your shoe, बट आप एक बार उसको करते करते इतने अच्छे तरीके से हो जाते हो दैट यू डोंट रिक्वायर योर फुल अटेंशन ओवर देयर, एंड यू जस्ट टाई योर शू लाइक एनीथिंग, लाइक इट्स जस्ट लाइक अ यूजुअल एक्टिविटी फॉर यू। आपको कोई इसमें ऐसा बड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती है। सो मोर यू प्रैक्टिस विद द सिस्टम, मोर इफिशिएंट यू विल जनरली बिकम। पहले मुझे भी लगता था कि नहीं हो पाएगा, लाइक इट्स टू डिफिकल्ट, इट्स टू कॉम्प्लेक्स। बट एक बार जब आप प्रैक्टिस करते हो, सिनेरियोस को रेप्लिकेट करते हो, इट बिकम्स वेरी वेरी इजियर फॉर यू। एंड वही चीज फिर इंटरव्यूज के अंदर भी देखते हैं कि ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस कितने इसने रेप्लिकेट करके देखे हैं, एंड कितना डेप्थ में आती है चीजें। दैट इज ट्रू विथ एवरीथिंग। लाइक अगर आप कोई भी चीज सीखने जाओगे, तो यू हैव टू लर्न दैट थिंग इन टू अ, लाइक इन अ डेप्थ। आई नो जनरली बहुत सारे कंपनीज ऐसी भी होती है, जैसे पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ डेवॉप्स, जो अलग अलग स्किल सेट्स, अलग अलग टूल्स देखती है। बट इन SAP, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन एनी ERP, जनरली कंपनीज ये देखती है कि आपको डेप्थ में कितना नॉलेज है, एंड कैन यू, आर यू गुड एट लर्निंग न्यू थिंग्स एज वेल, कि कल को कोई इंटीग्रेशन वाला सिनेरियो आ गया या कुछ भी आ गया, तो आर यू क्विकली अडेप्ट दोज थिंग्स और नॉट। Generally it's like that. Okay, so let's again go back. I'm using PA40। अब ये देखो, ये तीनों एरो काय के लिए है। अभी देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अगर मेरे को प्रीवियस सेशन पे जाना हो तो आई कैन यूज स्लैश एन। इंस्टीड ऑफ यूजिंग स्लैश एन ऑल्सो, आई कैन डायरेक्टली यूज दिस टैब which is a back. Okay, let's say I want to use another one. I want to log off completely, so I can use this another one. This is this yellow one. दिस इज लॉग ऑफ। एंड अगर मेरे को उस सेशन को क्लोज करना है, जैसे अगर मेरे को ये सेशन को पूरे को क्लोज करना है, सो आई कैन यूज दिस क्रॉस साइन, दैट इज कैंसिल दिस सेशन। सो आई हैव ऑलरेडी कैंसिल्ड दैट सेशन। ओके, सो this these three tabs are about that only. Okay, when you want to print anything, अगर कोई configuration आपको यहाँ पे सेव करना है, you want to print anything, you can generally go back onto the print. Generally एक system से इसको connect करना पड़ता है, then only you could be able to perform, but ideally like that only. There is another reporting related thing I want to share with you guys, is like, let's say कि एक transaction code है which is the PAR1. Okay, now this transaction code is generally used for the employee list. अगर मेरे को देखना है कि इस client के अंदर एक system, इस system के अंदर कितने employees हैं अभी, so I can execute this transaction and it will give me the list of all the employees available in the system. As of now, there are only 3 employees. As of now in the system, there are only 3 employees. So if ये 3 employees की list आ गई, let's say I want to fetch this list into an Excel format. अगर मेरे को ये list एक Excel format में चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा? So I can select a local file over here, and then I can okay, it's saving in an RTF format over here. Let me try the other way. So I have these 3 employees. I'm going into the setting, save. Okay, I cannot save a local file over here. Okay, I think so इस system में कोई problem है, I guess configuration wise वो setup नहीं है जो चीज़ होनी चाहिए, but I'll explain you this part in another way after some of the sessions, कि generally सिर्फ एक तरीका नहीं है, ideally there is another way through which you can extract the employees, which is SE16N. This is another transaction code. This is a reporting related transaction code. PAR1 SE16N. अगर आपको रिपोर्ट्स निकालनी है, मान लो आपको thousands of employees और उनके डेटा को फैच करना है, तो then you can use SE16N, and you can also use PAR1 in those scenarios. We'll go through SE16N in 1 second.
AC16N. So here I can enter a few things over here and I can directly fetch the file in an Excel format directly from here. So I'll cover that part, this part later. जब अपने पास में कुछ employees आ जाएंगे और system के अंदर. Okay. So let's understand one more important thing about. अब देखो generally कल तो अपन ने ये समझ लिया कि who is an end user and who is a consultant. Now let's try to understand more into a brief. Generally a consultant कौन होता है और एक end user कौन होता है. तो let's simplify it with the tasks of end user. In a real time environment tasks क्या होते हैं end user के. ठीक है, let's say changing the employee data of the employee, the employee data, changing the employee data into SAP, in SAP. Employee data can be of any type. What can be the employee data? Employees का data मतलब क्या? Give me some example. Personal details, Like what? master data, address, Address, previous company, previous company, what else? Name, contact details, mandatory document like Aadhaar card, PAN card, what else? Okay, bank details also. bank details of Right? Things like that. Acha, apart from that, what? Hiring an employee. So I can, instead of writing a hiring, I can simply say performing actions. Now I can use this word since I've already explained what is action. Action is nothing, is something, the set of activities that I'm performing through PA40. So performing actions. अभी actions किसी भी तरह का हो सकता है. मतलब क्या? Hiring action हो गया. Termination हो गया. रीहायर करना हो किसी एम्प्लॉय को जो छोड़ के चले गया है उसको वापस लेके आना हो, रीहायरिंग एक्शन हो गया. रिटायरी करना हो गया. पोजीशन चेंज करना हो, लेट्स से changing the department of an employee, all those things, right? So मैं simply उसको हायर करने की जगह ये एक मैं क्या कह रहा हूँ कि any kind of an action that includes hiring, termination, rehiring, retiring. It can be, depends on to the company. There can be additional actions as well. So performing actions onto the employee. What else? Updating, sometimes updating timesheets of employees as well. Employees as well. Fetching reports. Now see, reports can also be the different types. See, time related reports मतलब किस एम्प्लॉई ने, अगर जैसे अगर मैं 100 एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ तो 100 एम्प्लॉयज ने कितनी लीव ली, किसने कितनी लीव ली, किस कोटा में से उसका लीव गया. सो दैट इज द टाइम रिलेटेड रिपोर्ट्स जिसके अंदर सारा के सारा टाइम रिलेटेड डेटा रहेगा अपार्ट फॉर द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज. So time related, it could be time related, it could be payroll related. Okay, it could be reports can also be like their basic details, just a simple reports of their basic details. So reports can be of n number of reports. So generally for fetching reports, they themselves also use this transaction code only, PAR1 and SE16N, यही वो ट्रांजैक्शन कोड्स भी वो लोग यूज करते हैं. ठीक है. So these are some of the tasks of end user. We are short on time, but I'll continue this one later. But as of now, let's quickly see some of the tasks of a consultant. Tasks of consultant. See, try to understand one thing from the again what I have explained yesterday. Consultant कौन है? जिसको एक स्टैंडर्ड SAP सिस्टम को
क्लाइंट कस्टमाइज करना है, they have to customize it as per the client requirement. स्टैंडर्ड सिस्टम मेरे को एसएपी ने दे दिया, अभी मेरा क्लाइंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर लेट्स से चीजें बहुत डिफरेंटली वर्क करती हैं, ठीक है, तो आई हैव टू कॉन्फ़िगर द एंटायर एसएपी एचसीएम सिस्टम एज पर माय क्लाइंट रिक्वायरमेंट कि उनको क्या चाहिए, what kind of reporting should be there, what kind of time sheet or what kind of absences or attendances should be there for the employee. So again, tasks of consultant. अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये क्या कर रहा है, ये जनरली अपडेट कर रहा है चीज़ों को, राइट, चेंजिंग द एम्प्लॉय डेटा इन SAP. What I am doing over here, I am configuring the data, configuring configuring the employee related system. अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, देखो, अगर मैं चाह रहा हूं कि एड्रेस जो है वो सिर्फ एक्शन के टाइम पे ही, मेरी कंपनी ये चाह रही है कि जो एड्रेस ये एंड यूजर्स अपडेट कर रहे हैं ये सिर्फ एक एक्शन के थ्रू ही होना चाहिए, डायरेक्टली वो जाके अपडेट नहीं कर सकते. सो दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट. मतलब क्या कह रहे हैं, वो एक एडिशनल फंक्शनैलिटी लेके आ गए मेरे साथ में कि लेट्स से दे आर सेइंग दैट द एड्रेस should only be able to change at the time of action only. This is one such requirement. There can be the other requirements as well over here. Let's say they want to add, जैसे कि bank details हो गया. Now let's say my client says to me that okay, we don't want, हमको अब जैसे SAP ने तो बहुत सारी परमिशन दे दी, बट मेरा क्लाइंट कह रहा है SAP की परमिशन के अकॉर्डिंग बैंक डिटेल्स को मैं जब सेव करता हूँ स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर, तो बैंक डिटेल्स को मैं दो तरीके से सेव कर सकता हूँ, वन इज चेक एंड अनदर इज द बैंक अकाउंट. But see what my client is telling me. The employees should not be able to save their bank details in check. उनको सिर्फ बैंक अकाउंट का ही परमिशन होना चाहिए. So, okay, this is one another requirement that okay, employees should only be able to save bank account. Check payments are prohibited. Check payments are not allowed. So this is this is again a basic scenario that I'm explaining, but there can be the n number of scenarios over here itself. N number of scenarios. क्योंकि employee related information के अलावा भी बहुत सारी informations होती हैं. So there can be n number of such scenarios which I have to keep it in mind. And जो ये end user tasks perform कर रहे हैं उनके tasks को मैं configure करूँगा, consultant configure करेगा. जैसे कि अब यहाँ पे मेरा क्लाइंट मेरे को कहता है कि अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग द डिपार्टमेंट वी वांट टू ऐड अनदर टाइप ऑफ एन एक्शन, हमको एक अनदर टाइप ऑफ एक्शन ऐड करना है, और लेट्स से वी वांट टू चेंज द हायरिंग एक्शन ओनली, वी वांट टू चेंज द हायरिंग एक्शन आल्सो. वी client wants to change the hiring actions, change the action types, add new action types, new action types को उनको add करना है, all those things, etc, etc, etc. Update timesheets of employees. But consultants क्या करता है, like again in the specifically in the context of timesheets, consultant क्या करता है, configuring the absences कि किस कैटेगरी के एम्प्लॉय को कौन कौन सी एब्सेंसेस अलाउ होंगी. लेट्स से कि अगर कोई एक रिक्वायरमेंट है, लेट्स से मेरे क्लाइंट पे कोई कहता है कि सैलरीड एम्प्लॉयज जो हैं उनको कैजुअल लीव अलाउ नहीं होनी चाहिए, कैजुअल लीव शुड नॉट बी अवेलेबल फॉर देम. कैजुअल लीव जो है वो सिर्फ आवरली एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल होनी चाहिए. Casual leaves
should be available for hourly employees only. For hourly employees. यहाँ पे इनका काम है सिर्फ अपडेट करना. यहाँ पे मेरा काम है पूरे सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना with as per what they are actually requiring. Similarly, it works in the reports as well. Let's say they come to me and they say that we want to build a custom report. We want to, client wants to build a custom report, build a custom report. उस कस्टम रिपोर्ट के अंदर सिर्फ एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए, उनका फर्स्ट नेम होना चाहिए और उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए. सो अगेन इनका काम है सिर्फ रिपोर्ट्स को फैच करना, बट सिस्टम के अंदर वो सारे रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर करना मेरा काम रहेगा. ओके, सो आई थिंक सो फ्रॉम अ थियोरेटिकल परस्पेक्टिव I could be able to give you much more insight कि और क्या क्या activities generally real time environment में करते हैं, but I think so I've tried to explain again like कि generally end user क्या करता है और generally consultant क्या करता है. But again when we will be working onto the system, then we'll slowly and gradually like जैसे ही अपना course थोड़ा complete हो जाएगा 20-30%, you could easily be able to compare like who is the end user and who is the consultant. Okay. So the consultant is a person who generally configures the entire system. उसका काम सिर्फ system को use करना नहीं है, सिस्टम को क्लाइंट के अकॉर्डिंग मोल्ड करना है, कस्टमाइज करना है. एंड एंड यूजर इज द पर्सन हु इज जस्ट ओनली रनिंग द बिजनेस एक्टिविटीज लाइक हायरिंग एम्प्लॉइज और प्रोवाइडिंग पेरोल टू द एम्प्लॉइज, रनिंग द पेरोल इन द बैक एंड. पेरोल रन करना अलग चीज है, पेरोल कॉन्फ़िगर करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. Okay, so that's it for today's session. Any questions in this? No, sir. Anything, any stupid question is fine with me. Don't hesitate. Actually, when we will work on the system, that time we will have the queries. Right now, we don't have any queries. For mine, I don't have any queries. Okay. Still, if you get any kind of a query, I'll upload all of this thing over there. Still, if you get any kind of a query, let me know. And yeah. Okay. So I'm stopping the recording over here, and we'll continue on Thursday. Okay. Okay, sir.